Rinki ma'am, am I audible? Yes, sir. Okay. So you start. You start sharing. Yes, sir. Okay. So good afternoon, all the participants, the resource person, Rinki ma'am. On behalf of Aryabharta Sahodaya School Complex, I welcome you all on our second online training. This training is on health and our resource person, Mrs. Rinki Choubey, is here with us. And now I request you to please start, ma'am. Yes, sir. I'm just sharing the PPT, sir. Okay, thank you. Hello, sir. Ma'am. I'm audible, sir. Yes, perfect. Sir, my PPT is visible. The PPT is not visible, but it's showing that you're about to share something. Share a content, na? You are starting to share something, it's coming. It's coming. Okay, sir. I'm just doing the same, sir. Okay. I have shared once, but why it is not sharing? Network is also working properly, sir. Hello. Sir, can you share, sir? Hello. Yes, sir. Uh, Ma'am, it's showing here that Rinki Chaubey is starting to share something. Yes, sir.
Sir, can you share the PPT? Are you having this PPT, sir? May I share you? Yes, please. Okay, ma'am. Sir, I'm sharing you the PPT. Sir, shared, sir. हेलो। हाँ सर, देखिए ना, अभी मैंने पीपीटी शेयर किया है, आपको दिखाई दे रहा है? It's showing. Showing now? So I'm Yeah. beginning. So thank you, sir. Thank you for giving me the chance, sir, for the second online Sahodiyas training. So let's begin our session. It's already being late. So this is a very interesting topic. We all know that health is a wealth. So we have to just continue with this program so that we can also teach the student what does the health means and what is the wellness. Okay. So we will begin this program with uh, the slide. Okay. I'm just showing the slide. The objectives. What is the objective of this school and wealth wellness program? The main objective is to initiate, to teach the students that what is the psychological support and the services which the school must give to the students related to the health and their well-being. Now NCRT has developed a curriculum so that to framework that to teach the teachers to the students from the pre-primary level to the secondary stage is as what does the health mean? We all know that health is the most important part of our life. If we are healthy, we are fine, we are fit. But it doesn't mean the person who is seen to be healthy.
it is already being healthy. So, what does a health define? Health is a state of complete physical, mental, and social well being, and not simply the absence of disease. In other words, just because you feel okay doesn't mean you are okay. Just before I have told you that ये हमें अगर अगर कोई इंसान बहुत अच्छा दिखाई देता है, फिट एंड फाइन दिखाता है, अरे ये तो कितना अच्छा है, इसका ये मतलब नहीं होता कि वो इंसान सच में एकदम हेल्दी ही है, उसके अंदर में बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। सो अगर कोई भी बंदा फिजिकली, मेंटली और सोशली वो हेल्दी है, इसका मतलब है कि वो हेल्दी है। Now, what is wellness? Wellness is the interactive process of becoming aware and practicing healthy choices to create a more successful and balanced life. We all know very well that wellness, if we are well, means we can do each and every work which we want. PPT So is not PPT is not being shown. Stop. PPT is not being shown, sir. Yeah, please share once again. Okay. But in my place, this being that is shown. Oh, it has been stopped, sir. Why it is being stopped? Yes, ma'am. Ma'am, I have shared. You start. रिंकी मैम आवाज आ रही है आपकी, कंटिन्यू कीजिए। You please start. I've shared. रिंकी मैम
नहीं. Start, ma'am.
Okay, I think now I'm audible. Himanshu sir, I'm audible. Yes, you are perfectly audible. Now you can go ahead. Okay, sir. Sir, can you just yeah, okay. So sorry for the disruption because it's a technical fault. So we will just begin with this. That we are just showing the PPT of behaviors that promote wellness. So being a smart consumer, exercise at least 3 times per week for 60 minutes. We all know very well that how much exercise is important in our life because the doctor also says that walking is the best exercise. So every people does. Okay, eating a variety of foods from all the food groups, eating the diet low in fat, cholesterol, sodium. We all know very well. हमें सबको पता है कि जितना अगर हम लोग कोलेस्ट्रॉल लेते हैं उतना ज्यादा हमारे अंदर उसके बाद फैट्स होने लगती है. सर पीपीटी इज नॉट showing. Slide.
Sir, now I am audible, sir. Yes, ma'am, you're audible. You start. You start, please. Audible. Rinki ma'am, you're audible.
Hello. Yes, sir. I'm audible. Yes, you are audible. Would you wish Okay, to? sir. Please change the slide, sir. Sir, change the slide. Yeah, wait. Yeah, Sir, once more. yeah. Okay, now, sorry everyone, because it's a network issue. It's not from my side. It's from the internet. It is an internet issue, sir. Okay, so let's begin. It's intellectual wellness. So what is intellectual wellness? Creative and stimulating mental activities using available resources to expand knowledge and skills. हम अपने कोई भी, if we want to expand our knowledge, what we will do? We will just expand the knowledge of everything, available resources, what we are having. So next slide, please. Environmental wellness, ability to care for the environment, knowing its resources and how to take care of it. We all know very well that how much our natural resources is being used. So we must just take care for the environment also. So we must take care of the environment also, and we must take steps to. Himanshu sir, please, आपका mic से आवाज आ रही है. Spiritual wellness. एक्सप्लोरिंग द मीनिंग ऑफ आस्किंग हु आई एम आई. हम लोग बोलते हैं ना, भगवान के पास जाते बोलते हैं हम कौन हैं, हमारा आखिर यहाँ पर एग्जिस्टेंस क्या है, हमारा हम अपने अंदर की वॉट एवर द ब्यूटी ऑफ आवर सराउंडिंग, वी जस्ट अप्रिशिएट द ब्यूटीज ऑफ आवर सराउंडिंग्स ऑल्सो. ओके, सर स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड. Now, who are the health and wellness coordinator? Interested in such subjects and sensitive to issues related to children, non-judgmental, who are gentle with students, should have good relationship with the students. हमारा relationship अगर अच्छा होगा तभी आकर के students जो होंगे, they will share their problems with us. Should be aware of local culture. और हमें अपने लोकल कल्चर से जानकारी, आजकल हम सब वेस्टर्न कल्चर को अपनाने पे लगे रहते हैं, but no one knows their local culture, what they are having from the roots, what they are from. We must learn how to be disciplined. हम शुड बी, हम अब कैसे डिसिप्लिन होते हैं वो होने चाहिए. शुड बी एबल टू अटेंड रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम. एटलीस्ट वन मेल एंड फीमेल हेल्थ एंड वेलनेस टीचर शुड बी डिप्यूटेड फ्रॉम ईच स्कूल. हमारा यहाँ पॉक्सको एक्ट है, हम उस पॉक्सको एक्ट के थ्रू भी जा सकते हैं, जिससे कि हम अपने टीचर्स को बता सकें कि व्हाट की हेल्थ एंड वेलनेस क्या होता है. शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड स्पीक द लोकल लैंग्वेज. हम ऐसे तो घर में बहुत लोकल लैंग्वेज बोलते हैं कि हमारी ये भाषा है वो भाषा है, बट आजकल के यंग जनरेशन दे डोंट नो हाउ टू स्पीक द लोकल लैंग्वेज, तो हमें उनको वो सिखाना चाहिए. हेल्थ और रोल ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस कोऑर्डिनेटर्स, हु कैन बी द हेल्थ एंड वेलनेस आफ्टर रिसीविंग ट्रेनिंग from the master trainers. Those persons who will train from the master trainers, they will be the health and mental coordinators. वो हमारे हेल्थ एंड मेंटल कोऑर्डिनेटर्स होंगे और वो एक्टिविटीज में क्लासरूम्स में पार्टिसिपेट करेंगे नेचर के थ्रू, and they will also play an important role in planning and organizing training programs for other teachers in the school. और अगर आप ट्रेंड हो जाते हो तो आप अपने स्कूल में भी आप इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, so that other teachers can also get the benefit of this program. So next slide. The program covers 11 things. This program covers 11 things, but there's a little time with we are having. So we will discuss the few programs today. The 11 themes are growing up healthy, emotional well-being and mental health, interpersonal relationships, values and citizenship, new gender equality, nutrition, health and sanitation, prevention and management of substance misuse, promotion of healthy lifestyles, reproduction health and HIV prevention, safety and security against violence and injuries, promotion of safe use of internet and social media behavior. These are the few programs, 11 programs, which comes under the social well and health and wellness program. But we will discuss a few of them. The first one is growing up healthy. So
What is adolescence? We all gone through this process. हम adolescence से हम सभी गुजर चुके हैं. इसमें क्या होता है? इसमें there is a period of rapid physical, mental and socio-emotional changes. इसमें हमारा rapidly हमारा physical change होता है, mental change होता है, socio-emotional changes होते हैं. हमारे healthy transition to adulthood, children need to understand and manage changes within themselves as well as changing expectations from the outside world. हम बच्चे बहुत कुछ सोचते हैं कि अरे हमारा ऐसा है वैसा है, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि those things they will also get from the outside world. They must build their skills such as critical thinking, problem solving and decision making. They must build these type of critical changes so that they can have change. They can have changed their ideas, their myths, whatever the myths and misconception which is associated with the adolescence. हमारे adolescence के साथ बहुत सारे myths associated होते हैं, misconception associated होते हैं, जो कि हमें क्या होता है, उनको change करना होता है. So next slide. Changes during adolescence. What are the changes? There is first change is the physical changes in body. हमारे अंडर में, हमारे बॉडी के अंदर जो भी फिजिकल चेंजेस होते हैं, हमारे ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स डेवलप्ड होते हैं, इम्प्रूव्ड होते हैं. eagerness to experiment and learn new things. हम होता है ना कि हमें आज ये भी जानना है, हमें वो भी जानना है, हमें हर कुछ सीखना है. Whatever the things we see, हमें लगता है इस एज के बच्चों को कि उन्हें ये सारी चीजें आनी चाहिए. Increase attention towards own appearance and looks. अब वो अपने आप को आईने में देख करके अगर वो सीख जाएंगे, अगर इस एज के बच्चे होते हैं तो एडोलसेंस पीरियड के, जो कि 9 to 15 एज होता है हमारा एडोलसेंस पीरियड, उस एज के बच्चे अपने आप को पता नहीं वो इतना लगता है कि कहीं भी जाना हो तो वो अपने आप को सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं. They try that they should look good. Okay. Trying to build independent identity. वो अपनी independent, अगर आप उस एज के बच्चों को बोलोगे कि आपके साथ वो कहीं बाहर चलें, तो उन्हें लगेगा कि नहीं, मम्मा क्यों लेके जा रही है. वो उनकी एक सिंपल एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी वो खोजते हैं कि हाँ, हु एम आई एम, मैं जो हूँ मैं ही हूँ. एंड बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट बाय पेरेंट्स. आप उन्हें चाहोगे कि कहीं भी बोल दो, कुछ भी बोल दो, तो नहीं. We must respect their values, we must respect their thinking, we must respect their emotions also. So the and desire to make new friends and to socialize. उन्हें सबसे ज्यादा डिजायर होता है कि वो न्यू फ्रेंड्स बनाए. और सोशल मीडिया पर आजकल के बच्चे आप देखते होंगे कि भी कितना एक्टिव होते हैं. वो भले ही आपके सोसाइटी में सोशलाइज हो जाने की नहीं कोशिश करे, बट सोशल मीडिया पे वो सोशलाइज होने की आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं. increasingly influenced by peers. अब वो हमसे कुछ सीखे ना सीखे, लेकिन वो अपने दोस्तों से बहुत कुछ सीखते हैं. उन्हें हर चीज, उन्हें अगर कुछ भी समझना हो, अगर वही सेम थिंग अगर आप उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, अगर एज अ टीचर वो आपकी थोड़ी बात मान भी जाए, बट उनका इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा उनके पीयर ग्रुप का होता है. Energetic and enthusiastic with increased spirit of fun and adventure. अब वो अपना हर चीज देखते होंगे कि कोई भी चीज इंथुसियास्टिकली करते हैं, मतलब अरे अब बस आज तो ये सब मेरी जिंदगी का सबसे आखिरी है, उस इंथुसियाज्म से करते हैं. इस एज में बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं, इमोशनली हो उनके चेंज, बॉडी में चेंजेस आते हैं, जैसे कि प्यार, गुस्सा, फीलिंग टुवर्ड्स फ्रेंड्स और इम्पल्सिव बिहेवियर. डेवलपमेंट ऑफ एस्पिरेशन फॉर फ्यूचर, इंक्रीज कंसर्न अबाउट कैरियर. और आजकल के बच्चे ऐसा नहीं कि वो अपने कैरियर को लेकर कंसर्न नहीं होते हैं. हम जितने चिंतित होते हैं उतने ही हमारे बच्चे भी चिंतित होते हैं. उन्हें आगे जाकर के व्हाट दे वांट टू बिकम इन अ फ्यूचर. begins taking decision about self. वो अपना खुद से डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं. एंड द नीड फॉर एप्रिसिएशन एंड रिकॉग्नाइजेशन. जिस तरीके से अगर हम कोई काम करते हैं तो अच्छा करते हैं तो हम सोचते हैं कि हाँ, वो हमें भी कोई अप्रिशिएट करे, हमें भी कोई रिकॉग्नाइज करे, हमें भी कोई थैंक्स बोले. इन द सेम वे this age groups also need the appreciation and recognitions from others. So next slide please. Some important points about adolescence. Change is a hallmark of adolescence. सबसे पहले अगर adolescence का सबसे important चीज hallmark है तो वो क्या है कि वो उनकी बॉडी में, उनके व्यवहार में, उनके बिहेवियर में, उनका बात करने का तरीका, हर चीज में चेंज दिखाई देता है. Adolescence is phase in life when individuals develop. उनकी खुद की एक आइडेंटिटी डेवलप हो जाती है,
उनका इंडिपेंडेंट थॉट्स हो जाता है, उनके रिलेशनशिप्स बनने लगते हैं, interest and opinions which are vital to process of growing up. Adolescence is a period of physical and emotional changes which are triggered by a set of hormones. जिस तरीके से हम बोलते हैं कि अगर इस एज में हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से हमारे बॉडी में, जैसे अभी के एज में बच्चों के एडम्स एप्पल निकलने स्टार्ट हो जाते हैं बॉयज में, जिससे उनकी आवाज भारी होने लगती है। फीमेल्स में अलग बॉडी में चेंजेस होने लगते हैं, तो दे आर ड्यू टू द चेंज इन द सेट ऑफ हॉर्मोन्स। डू नॉट कंपेयर योर ओन फिजिकल चेंजेस विद अदर्स। अब कोई बच्चा बहुत ही ज्यादा जल्दी ग्रो होने लगता है, जैसे कोई 10 साल के एज में ही 15 साल का दिखने लगता है, कोई 15 साल का एज में भी 10 साल का दिखने लगता है। तो हमें अपने फिजिकल चेंज को किसी भी अदर बच्चों के साथ तो कंपेयर करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ हमारे हार्मोनल चेंजेस के अकॉर्डिंग होते हैं। चेंजेस अकर एट डिफरेंट टाइम्स फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल्स, और वॉट एवर द चेंजेस होते हैं, जैसा मैंने अभी बोला कि हर चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सेट ऑफ हार्मोन्स, और वो डिफरेंट पीपल में डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स होते हैं और डिफरेंट टाइम में वो डेवलप होने शुरू होते हैं। सो वी मस्ट नॉट कंपेयर ourselves to others regarding the changes which are happening in our body. So next slide, sir. So next slide. Himanshu sir, next slide please. Okay, maintaining hygiene. So what is, we must maintain hygiene. But when we are going for the bath, we must wash our private parts so that we can avoid the infections which we are having in our future times. Change undergarments regularly. These are the few things which we must do for the hygiene purpose. जिस तरीके से हमें अपने हर चीजों को ध्यान रखना, we must clean our body parts. Okay, you can also make ensure that the does not have any metal or plastic parts in it, like glitter, gota, or hook, or any butters. If you are just making a sanitary napkins at our home, we must take these things in a concern that the cloth does not contain these type of things which can harm our body, which can infect our body. If cloth is reused, if the cloth is reusing many more times, they must be washed thoroughly with soap and dried in sun, so that the sunlight can is an excellent disinfectant. हम बोलते हैं ना कि जो सनलाइट होती है वो एक्सीलेंट डिसइंफेक्टेंट होती है, और वो अगर प्रॉपरली अगर सनलाइट में अगर कपड़े सूखते हैं तो हमारे जर्म्स जो होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो ऑटोमेटिकली वो किल हो जाते हैं। Some schools have initiatives which offer another safe way to dispose sanitary pads. There should be no shame associated within the process of disposing sanitary pads. और कुछ schools में उन्हें बताया जाता है, because we all very much well, because we know very well that sanitary pad is the most thing in which can harm our environment. ये सबसे ज़्यादा pollution हमारे environment में फैलाती है। तो कुछ स्कूल इसके लिए इनिशिएट किए हुए हैं कि they teach their students, girls student, to how to dispose the sanitary pads. So next slide, sir. So nocturnal emission. This is a part of a body change in the boys which has been seen. Formation of, in this age, in the adolescence, there is the formation and discharge of semen which occur during mid-adolescence and manifest as nocturnal emissions. It signifies reproductive maturity for an adolescent. If the nocturnal emission has been started, it means that the boy has been matured. Boy mature, इनके अंदर में sperm की production start हो जाती है. Nocturnal emission, also known as nightfall wet dream, is normal. यहाँ बच्चों को nightfall होते हैं, wet dreams होते हैं, ये normal होती है, उन्हें समझाना चाहिए। बच्चे embarrassed feel होते हैं, वो feel होता है कि नहीं हमें क्या हो गया, am I suffering from a disease or whatever the things. In the same way, just like when a girl child start their menstruation cycle, they also feel the same thing. In the same way, the boys also feel when they start discharging the semen from their body. It's a natural process. We must tell them to the boys that it's a natural process, and there is no issues they are having in their body, and it has no negative influence on the body. हमें उनको बताना चाहिए कि इसका कोई भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं होता है, ये एक नॉर्मल बॉडी में चेंजेस होते हैं जो इस एडोलसेंस पीरियड में हम लड़कों को होते हैं, एंड द गर्ल्स आल्सो स्टार्ट बीइंग मेंस्ट्रुएशन. ओके सर, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज.
The second part is the emotional well-being and mental health. So what is the emotional well-being and mental health? Develop awareness about mental health skills. Develop emotional well-being in self and fostering and supporting one another in developing positive attitudes. Supporting one another in developing positive attitudes and assessing help when required. Build awareness around various emotions and expressions. Identification their own and their peers' personal strengths and skills to withstand stressful situations and seek help when required. हमें ये सारी चीज़ों को बच्चों को बतानी चाहिए कि क्या अवेयर होनी चाहिए कि उनका मेंटल और हेल्थ स्किल्स क्या होने चाहिए, उनमें इमोशनल वेलबींग जो होना चाहिए उनका कैसा होना चाहिए। वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं अपने पीयर ग्रुप से। उनके पीयर ग्रुप्स में जो भी चीज़ें होती हैं उन्हें वो समझने की क्षमता होनी चाहिए कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं। ओके, सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Some important points about emotions and their well-being. Emotions are a part of everyone's life. अगर हम बोला जाता है ना कि अगर किसी के अंदर में इमोशंस नहीं तो हम उनको बोलते हैं तुम क्या इंसान ही नहीं हो। तो इसी तरीके से इमोशन जो होता है हर किसी के जिंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। दे आर नाइदर गुड नॉर बैड बट हाउ दे आर एक्सप्रेस्ड इज मोर इम्पोर्टेंट। इमोशंस जो होते हैं वो कोई बुरे और खराब नहीं होते हैं, वो हम कैसे उस इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड the way which how we are expressing it may be bad or it may be good, but emotions are not good or bad. Becoming aware of our emotions and labeling them is the first step in managing challenges emotions. और जो हमारा अगर हम इमोशंस को अगर समझ सकते हैं और ये करते हैं तो ये हमारा पहला स्टेप होता है जो कि हम इमोशंस को चैलेंज करते हैं। जैसा मैंने पहले भी बोला है कि इमोशंस खराब या बुरे नहीं होते, अच्छे नहीं होते। इमोशंस जो होते हैं वो एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इमोशंस मैनेजिंग इमोशन इज एन इम्पॉर्टेंट स्किल दैट वन नीड्स टू प्रैक्टिस। कोई कोई होते हैं बहुत इमोशनल होते हैं, बात करते करते उन्हें रोना आ जाता है, कभी कभी वो लोग अपने आप हंसने लगते हैं। तो दीज आर द इमोशनल फीलिंग्स एंड वी मस्ट नो हाउ टू मैनेज दीज थिंग इमोशंस। इमोशंस आर अ नेचुरल रिस्पॉन्स टू सिचुएशन इन लाइफ। और इमोशंस जो होते हैं वो हमारे नेचुरल रिस्पॉन्स होते हैं जो कि हमारे लाइफ के सिचुएशन में होते हैं। नाउ नेक्स्ट स्लाइड सर। SWOT. What is SWOT? It defines S for strength, W for weakness, O for opportunities, and T for threats. हम लोग सभी लोग को पता होता है कि हम सभी के अंदर ये सारी चीजें होती है, स्ट्रेंथ होती है, हमारे पास वीकनेस होती है, वी मस्ट ऑल्सो गेट द अपॉर्चुनिटीज और हमारे अंदर में थ्रेट्स भी होते हैं। तो व्हाट इज स्ट्रेंथ? Strengths are the internal resources that you have and things do very well. They can be a specific skill or ability that you are born with or that you learn, singing, such as singing, singing, playing music, swimming, drawing, etc. ये सारी चीजें होती है। बोलता जाना है कि अरे वो तो बचपन से ही बहुत अच्छा गाना गाता है, वो तो एकदम जन्म लेते ही वो बॉर्न म्यूजिशियन है, वो बॉर्न स्विमर है। तो ये सारी कुछ ऐसी चीजें होते हैं जो उनको जन्म से ही मिलती है। तो ये सब क्या होती है, ये सब उनके इंटरनल रिसोर्सेज होते हैं, वो उनके स्ट्रेंथ्स होते हैं। वीकनेसेस आर स्पेसिफिक स्किल्स और एबिलिटीज विच यू नीड टू इम्प्रूव अपॉन और आर करेंटली लैकिंग। वीकनेसेस जो होते हैं वो हमारे स्पेसिफिक स्किल्स होते हैं, एबिलिटीज होते हैं जिसको हमें इम्प्रूव करनी चाहिए, जो हमारे बॉडी में करेंटली लैकिंग होते हैं। अपॉर्चुनिटीज होते हैं आर फेवरेबल एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट आर अवेलेबल फॉर योर सपोर्ट एंड ग्रोथ। दे कुड बी पीपल or situations that help you recognize your strengths, use them, and learn new skills. Threats are obstacles that come in your way or external factors that have the potential to block your growth or harm you. हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे जितना हम आगे बढ़ते हैं उतने हमारे पीछे से पैर खींचने वाले लोग होते हैं। तो these are the threats. ये हमारे obstacles होते हैं जो हमें या तो हमारे रास्ते में बाहर से मिलते हैं या फिर हम अपने पोटेंशियल के हिसाब से बनाते हैं जो कि हमें हार्म पहुंचाते हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। What's a mental illness? A mental health condition that has a negative effect on the way an individual, जैसे हम अगर हम सोए भी हैं, मेंटल इलनेस क्या होता है, आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, हम फील करते हैं कि अब तो हमें सब कुछ जो है वो
आपका हो चुका है, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम किस तरीके से बिहेव करते हैं, हमारे बिहेवियर पे कोई भी हमारा रिस्ट्रिक्शन ये नहीं होता है कि हम कैसे उसके साथ चिड़चिड़ापन हमारे अंदर में आ जाता है। तो ये सारी कुछ होते हैं जिससे कि हमारा क्या दिखता है कि दैट वी आर मेंटली इल। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट मेंटल हेल्थ। क्या मेंटल हेल्थ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं? द स्टेट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग कैन कीप चेंजिंग अलोंग अ कंटिन्यूम। ये जो मेंटल हेल्थ होता है और वेलबींग जो होता है वो हमेशा एक कंटिन्यूटी में ये चेंज होता रहता है। When faced with everyday challenges, a person could move along the continuum from a state of well-being to distress. और अगर जब हम ये challenges fail करते हैं, feel मतलब अपने अंदर फेस करते हैं, तो हम क्या होता है कि हम अपने वेल-बीइंग, अब जब हम सही रहते हैं वहां से लेकर के डिस्ट्रेस जब तक हम परेशान रहते हैं वहां तक हम इसको कंटिन्यू करते हैं। However, if one has the skills or the right support, the person can move out of this state, and this may not affect the person's ability to work productively or over a long period of time. Regular practice of simple relaxation exercise and mindfulness helps us cope with distress. हम लोग को योगा करने के लिए बोला जाता है। अब ये योगा क्या करने से क्या होता है कि हम अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं, हम अपने आप को इन चीजों से दूर रख सकते हैं एक्सरसाइज करके, माइंडफुलनेस डिस्ट्रेस करके। अगर हम योगा करते हैं तो हम योगा करने से वो अनुलोम विलोम प्राणायाम इन सब चीजों को करके हम अपने आप को इन सब परेशानियों से दूर रख सकते हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इट्स जेंडर इक्वालिटी इंट्रोडक्शन। टू डेवलप नॉलेज एंड स्किल्स टू काउंटर जेंडर बेस्ड स्टीरियोटाइप्स। बहुत सारा होता है, अरे ये तो लड़का है, ये तो लड़की है, ये तो ट्रांसजेंडर है। देयर आर लॉट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, लॉट्स ऑफ वायलेंस, बहुत सारा वायलेंस होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं जो हमें प्रैक्टिस में पॉजिटिव जेंडर रोल्स होता है एंड प्रमोट जेंडर इक्विटी एंड राइट्स इन ऑल सिचुएशन। हमें हर परिस्थिति में जेंडर को इक्वल रखना चाहिए, उनको राइट्स देना चाहिए कि नहीं कोई लड़का नहीं कोई लड़की नहीं, अगर लड़का वहाँ ये काम कर सकता है तो द गर्ल्स कैन ऑल्सो डू एंड द ट्रांसजेंडर्स कैन ऑल्सो डू। डेवलप बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेंडर आइडेंटिटी इंक्लूडिंग ट्रांसजेंडर। हमें अपनी बेसिक आइडेंटिटी को अपने अंदर लाते हैं, ऐसा नहीं कि ट्रांसजेंडर नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन जेंडर स्टीरियोटाइप्स एंड नेगेटिव कंस्ट्रक्ट्स ऑफ मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। Begin to practice, promote positive gender roles and gender equity at home, school, society, and in media. Analyze gender norms and recognize power dynamics, identity, strategies to challenge gender-based discrimination and violence, and uphold equality in all interactions. तो हमारे अंदर में जो भी होता है हमें एनालाइज करना चाहिए कि वॉट एवर द जेंडर नॉर्म्स होते हैं, क्या पावर ऑफ डायनेमिक्स होता है, तो इन चीजों को हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। अपहोल्ड इक्वालिटी, अगर हम बोलते हैं कि नहीं ये तो काम सिर्फ लड़का ही कर सकता है, हम जिस तरह से अभी हमारे यहाँ रिसेंटली हुआ था कि मैम सारी चीजें तो फादर्स डे तो कभी एक होता है सिर्फ, ना ब्रदर्स डे होता है, ना ये होता है, बाकी जो भी होता है वो फीमेल्स डे होता है। तो ये भी एक तरह से कहीं ना कहीं हम डिस्क्रिमिनेशन ही करते हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड सर। Now understanding gender. Understanding gender. If given an opportunity, girls, boys and transgenders are capable and should perform all kinds of tasks. ऐसा तो नहीं होता कि अगर हम वो चीजें लड़कों को दे दे तो वो कर लेंगे और लड़कियां नहीं करेंगी, नहीं। All the genders can do. Even the transgenders are also capable to perform the same activity which we can give to the boys or the girls and work within the household as well as outside. और ऐसा नहीं कि हम लड़कों को बोलते नहीं नहीं ये आपका तो ये काम नहीं है, ये घर में लड़कियों का काम है, नहीं। अगर हम बाहर में अगर लड़कियां काम कर सकती तो व्हाई शुड नॉट द बॉयज कैन डू द वर्क इनसाइड द हाउस। सो दे मस्ट डू whatever the gender they are having, the how work should be divided equally among all of the genders. While work is important, leisure and play is an important for girls and boys, and equal opportunity must be provided to them. When individuals are treated in an equal manner and are denied certain rights on the basis of their gender, it is called gender-based discrimination. उसको हम gender-based discrimination बोलेंगे।
when individuals are just some genders are get more opportunity than others in society. कुछ genders जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा opportunities उनको मिलती है rather than others society. Discrimination can play out in many ways. Discrimination बहुत तरीके से हो सकता है. हम उनको कैसे भी discriminate कर सकते हैं than others in society. Charger. Discrimination can play out in many ways such as access to education, health. हम जैसे बोलते हैं कि अगर हमारी बच्चियां हैं तो वो बाहर पढ़ने नहीं जाएंगी रात को, उनकी कोचिंग नहीं हम उनको करने दे सकते हैं, उनका कैरियर चॉइस वो नहीं कर सकती हैं. दे डोंट, अगर वो बनना चाहें पायलट तो नहीं, तुम लड़की हो तुम पायलट नहीं बन सकती हो, तुम बस ड्राइवर नहीं बन सकती, तुम ऑटो ड्राइवर नहीं बन सकती, तुम और भी चीजें जो हो सकते हैं जो मेल बॉयज कर सकते हैं वो तुम नहीं कर सकती हो. तो हम ऐसा बोलते हैं. तो क्या हाँ कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं कि हम उन बच्चों के साथ हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं. तो often what people are able to achieve or not depends less on their ability and more on the opportunities available to them. तो ऑफन जो भी अचीवमेंट्स होती है बच्चों की आपकी, तो वो ऐसा नहीं है. वी नीड टू एग्जामिन आवर ओन बिहेवियर एंड ऑनेस्टली एक्सेस वेदर वी आर डिस्क्रिमिनेटरी इन एनी और इन our interactions, and if so modify your attitudes and behavior in the spaces that we can influence. We should try to challenge discrimination and ensure that everyone is treated with equality and respect. हमें जहाँ पर बहुत ज्यादा से घर में स्कूल में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है बॉयज एंड गर्ल्स का, तो हमें वहां पर बताना चाहिए नहीं दैट बोथ आप लोगों का जो भी होता है बोथ आर इक्वल, आप दोनों इक्वल हो, आपको हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं. we may want to pursue our interest, we may want to pursue our interest which may not be aligned with the existing gender norms and stereotypes. We must understand the different causes of our problem before deciding the strategy to address the प्रॉब्लम. हमें हर चीज को जानना चाहिए. ऐसा नहीं कि हम बस स्टार्ट कर दिए कि हाँ ये होना है वो होना है और वी आर नॉट नोइंग एनीथिंग और वी आर जस्ट एक्सप्लेनिंग द एंड वी आर जस्ट गिविंग द ओपिनियन दैट यू मस्ट डू दिस यू मस्ट डू दैट. नहीं, हमें हर चीज को अच्छे से जानना चाहिए. टू चैलेंज जेंडर स्टीरियोटाइप्स एंड डिस्क्रिमिनेशन वी नीड टू डू what we can at our level. हमें अपने लेवल पर देखना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू, जैसे फ्रेंड्स के, स्कूल, फैमिली या फिर अदर इंस्टीट्यूशंस के थ्रू. नाउ अगेन मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, some important points about violence against specific gender. So next slide please. Gender-based violence is a form of violence that targets individuals or groups on the basis of their gender. हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि gender-based violence जो होता है हम सिर्फ किसी को मारेंगे या किसी को 2 थप्पड़ मारेंगे तो ही ये काम हो सकता है. नहीं, हम अगर किसी को अगर कुछ बोलते हैं, अगर हम बोलते हैं कुछ अलग तरीके से, if we are taunting a group of a gender, तो it means क्या करें, we are just violating them, हम उनको violate कर रहे हैं. जो कि कुछ भी हो सकता है, रिजल्ट फिजिकल रिजल्ट कर सकता है, सेक्सुअल और साइकोलॉजिकल हार्म को हमें पहुंचा सकता है या सफर कर सकता है. An important aspect of dealing with gender biased violence is to identify sources of help and seeking help for the purpose. Help can be sought from family members, friends, trusted adults, teachers, school principal, government functionaries, including the police, etc. to stop such violence. जैसे हम अपने बच्चों को भी बोलते हैं that you are free to talk to us, whatever the problem you are facing with someone, whatever the issues you are having at your home also, if you want to share us, you can share us, you can trust us. आप हम पे share कर सकते हैं, हम पे trust कर सकते हैं. It may not be easy to challenge gender-based violence, but it is important to do so. हम इसको नहीं कर सकते, but हमें करना चाहिए. If we uphold dignity, equality, and respect in one situation, we help to make the world a safer place. और अगर हम अपनी ये करते हैं, अपहोल्ड डिग्निटी को अपहोल्ड करते हैं, इक्वालिटी को करते हैं, तो हमें इस हर चीज में रिस्पेक्ट करना हर सिचुएशन में, एंड उनको हमें हेल्प करना चाहिए सो दैट दे कैन लीड अ सेफर लाइफ इन अ सेफर वर्ल्ड, और अपने सेफर प्लेस पर वो अपने वाइफ को इजी से लीड कर सके. सो नेक्स्ट स्लाइड सर. Nutrition, health, and sanitation. This is another program which is in the school health and wellness. Help in developing positive attitude and enhancing knowledge
to demonstrate healthy, nutritional and hygienic practice. बोला जाता है ना कि हमें अच्छा खाना खाना चाहिए, हमें हाइजीन में रहना चाहिए, है। तो हमें ये सब चीजें को दिखाना, उन लोगों को बताना चाहिए स्टूडेंट्स को कि आप कैसे उसको कर सकते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करके इंट्रोड्यूस द न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ एडोलसेंट्स। बच्चे आजकल क्या करते हैं, ओनली दे ईट पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, एक्स्ट्रा फैटी फूड्स, बट ये डजंट गिव द न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन नहीं देता है। तो उन्हें हमें न्यूट्रिशनल वैल्यूज दिखाना, बिकॉज इन एडोलसेंट पीरियड देयर इज अ लॉट्स ऑफ चेंजेस इन देयर बॉडी, सो दे नीड एक्स्ट्रा सप्लीमेंट so that they can do the things in a good way, अपने वो चीजों को अच्छे से कर सके, उनकी बॉडी अच्छे से ग्रो हो सके। explains different food groups, locally available sources and their importance of for maintaining good health। और उनको एक्सप्लेन करना चाहिए कि वो फूड ग्रुप्स, जैसे हम लोगों ने छोटी क्लास से पढ़ना सीखा है कि देयर इज अ एनर्जी गिविंग फूड, देयर इज अ बॉडी बिल्डिंग फूड, देयर इज अ प्रोटेक्टिव फूड। तो ये सारी चीजें उन्हें बतानी चाहिए कि कौन सी फूड को खाने से उनके बॉडी में अच्छे से ग्रोथ होगी और नहीं होगी। तो उन्हें इन चीजों को बैलेंस डाइट, व्हाट इज बैलेंस डाइट, वी मस्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट सो दैट दे कैन ईट अ रिच्ड balanced diet food, so that their body can grow in a good way. Identify and challenge nutritional discrimination and the myths related to nutrition। और उनको आइडेंटिफाई करके और उनको न्यूट्रिशनल डिस्क्रिमिनेशन, जैसे बोलते हैं कि नहीं ये चीजें हैं, ये गलत धारणाएं हैं जो भी न्यूट्रिशन के प्रति, उन्हें समझाना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए। एनहांस द नॉलेज ऑफ द लर्नर ऑफ द कॉजेज, प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट। आजकल के आप देखोगे बच्चों को टेस्ट कराने को, बॉडी टेस्ट कराने को गए और वो क्या बोले, मैम आपके तो बॉडी में बहुत ही ज्यादा विटामिन डी की कमी है, आप तो एनीमिक हो। ऐसा क्यों होता है इस एज के बच्चों को? इसलिए होता है बिकॉज नॉट दे आर नॉट टेकिंग द proper balanced diet. If they will take the proper balanced diet, they will not suffer from the vitamin D efficiency, or either they will be not called an anemic. So next slide, please. Here it is a chart that speaks food items. So next slide. Food items and food group. What are the food items and food groups? Just earlier I was saying that there is a energy giving foods. हम लोग बोलते हैं ना energy giving food, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो आपका इंस्टेंट एनर्जी, जैसे हमें इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो वो इंस्टेंट एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है। फैट्स हमारे बॉडी में स्टोर एनर्जी होता है, जब हमारे पास इंस्टेंट एनर्जी की कमी होती है तो फैट्स जो होते हैं वो स्टोर्ड एनर्जी जो होते हैं वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। अगर हमारे प्रोटीन्स जो होते हैं वो बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं, वो हमारे बॉडी को बिल्डअप करने में हेल्प करते हैं। और उतना ही नहीं, जो प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं वो विटामिन और मिनरल्स होते हैं। इसीलिए हमें बोला जाता है, डॉक्टर्स बोलते हैं कि हमें प्रॉपर मात्रा में हमें विटामिन लेनी चाहिए, हमें प्रॉपर मात्रा में मिनरल्स अपने बॉडी में इंटेक करनी चाहिए। एंड फ्रॉम वेयर डू विद these things we get from the grains, oils, fats, sweets, pulses, nuts, seeds, dairy products, meat, poultry, fish, eggs, vegetable, fruits। ये सारी चीजों से हमें एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड मिलती है, जो कि इस एज के हर एज के ग्रुप को इन चीजों को लेना चाहिए जिससे कि वो फिट एंड फाइन रह सके। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, यहाँ पर एक there is a written a food pyramid. First, at the top of the pyramid, there is a energy giving food, and the second bodybuilding food, again the protective food, and again the energy giving food. So what is the energy giving food? We have just earlier said it's used very little. एनर्जी गिविंग फूड जो होता है हमें बहुत कम मात्रा में खाना चाहिए, क्योंकि वो ऑयल, घी, बटर, शुगर होता है, जो कि ये सारी चीजें हमारे हार्ट को डिजीज प्रोवाइड कर सकती है। तो वॉट एवर द अमाउंट वी नीड, हमें जो भी अमाउंट नीड होता है तो वो चीज को हमें प्रॉपर वे में लेना चाहिए। जैसे मीट जो होता है, पोल्ट्री, नट्स, पल्सेस, मिल्क, योगर्ट, ये सब हमारी बॉडी को बिल्डअप करते हैं। तो वी मस्ट ऑल्सो टेक दिस टाइप ऑफ फूड्स सो डेट आवर बॉडी कैन ग्रो इन अ गुड वे। हमारा बॉडी अच्छे से प्रॉपर में हेल्दी एंड वेल्दी वो हमारे बॉडी जो वो ग्रो करे। प्रॉपर मात्रा में हमें वेजिटेबल्स लेना चाहिए, फ्रूट्स लेना चाहिए। वी मस्ट ट्राई दैट वी शुड ईट अ रॉ फ्रूट और द वेजिटेबल्स वी कैन ईट रॉ। अगर हम जो कच्चा खा सकते हैं हमें वो खाना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि हमें वो छुई करके खाना चाहिए, बिकॉज अगर हम छुई करके खाते हैं कोई भी चीज़ों को तो वो हमारे बॉडी के अंदर जो होते हैं हमारे जाएंगे, जो कि हमारे कॉन्स्टिपेशंस को भी दूर करते हैं। सीरियल्स, ब्रेड,
rice and chapatis. Again, this comes at the energy giving food. ये भी हमारे energy giving food में आते हैं. We must also take these foods so that we can grow healthy. So next slide, sir. Some important points about maintaining personal hygiene. तो हमें personal hygiene का अगर if you want to prevent from illness and infections from bacteria or viruses, we must maintain personal hygiene. हमें अपने personal hygiene को maintain करना चाहिए. जैसे हमें रेगुलर बेसिस पे वॉश करना चाहिए बिफोर ईटिंग और प्रिपेयरिंग फूड, आफ्टर प्लेइंग और गोइंग टू द टॉयलेट, अगर हम टॉयलेट जा रहे हैं या फिर हम खेल करके आए हैं या फिर हम खाना बनाने जा रहे हैं या फिर खाना खाने जा रहे हैं, तो हमें अपने हाथों को अच्छे से वॉश करना चाहिए. वी मस्ट ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे, राइंस माउथ आफ्टर एवरी, हमें अच्छे से राइंस करना चाहिए माउथ को, जिससे कि हमारा जो भी होता है वॉट एवर द फूड इज इनसाइड आवर माउथ इट कैन कम आउट. क्लिप फिंगर नेल्स व्हेन लॉन्ग, हमें अपने नाखूनों को टाइम टू टाइम कट करते रहना चाहिए. हमें बाथ डेली लेना चाहिए. हमें नाखून, किसी बच्चे को देखा होगा आपने कि नाखून को काटते रहते हैं अपने माउथ से, तो उन्हें ये चीजों से उन्हें मना करना चाहिए. सो कि दिस कैन हार्म बिकॉज इनसाइड देयर नेल्स देयर आर लॉट्स ऑफ जर्म्स वी कैन गोस इनसाइड देयर स्टमक इन देयर बॉडी, जिससे कि उनका जो इन्फेक्शन होता है वो उन्हें हो सकता है. उन्हें अंडरग्राउंड हमें डेली चेंज करने चाहिए. उन्हें फुटवेयर जो होता है जब भी बाहर जाओ वो चप्पल पहन करके जाए. कफ एंड स्नीज इनटू योर एल्बो, और हमें जब भी कफ या स्नीज आए तो हमें अपने एल्बो से या फिर हमें अपने हैंकी से हमें अपने फेस को कवर करना चाहिए. तो दीज आर द फ्यू पर्सनल हाइजीन वी शुड मेंटेन. सर नेक्स्ट स्लाइड सर. सर नेक्स्ट स्लाइड. There are the 7 C's for food hygiene to prevent food contamination. और यहाँ पे 7 C's होते हैं. वो 7 C's क्या है? Check, clean, cover, cross contamination, avoided, cook, cool, chill, consume. ये 7 C's होते हैं. What is check? Select food that is fresh. देखते हो आप लोग बाहर जाते हो सब्जी लाने के लिए, तो क्या होता है कि हम लोग बहुत ही फ्रेश फ्रूट्स लेने के लिए करते हैं. तो चेक करते हैं कि सूंघ करके उसको अच्छे से टच करके कि वेदर द फूड इज फ्रेश और नॉट, फूड है फ्रेश है या नहीं है. अगर हम पैकेज फूड भी खरीदने जाते हैं तो हम क्या काम करते हैं, पहले हम उनके डेट्स को चेक करते हैं कि चेक कि वेदर मतलब वो डेट जो है वो हमारे कंज्यूमिंग डेट के अंदर है या नहीं है. तो ये सब चीज हम उनको चेक करके ही हम फूड को खरीदते हैं. क्लीन, वाइप ऑल पैकेजेस, टिन्स, बॉटल्स बिफोर स्टोरिंग फूड. हमारा जब कोरोना आया था तो हम सभी ने ये चीजें सीखी थी कि वॉट एवर द फूड वी आर जस्ट ब्रिंगिंग फ्रॉम द आउटसाइड, वी मस्ट क्लीन द फूड स्टफ फर्स्ट एंड देन वी शुड स्टोर द फूड्स. हम लोगों ने कोरोना के टाइम में ये बहुत कुछ किया है, तो हम तो हमारी आदत तो बन ही गई होगी एक तरह से कि हम पर्सनल हाइजीन कैसे मेंटेन कर सकते हैं. वॉश होल फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड अदर फूड बिफोर कुकिंग और कंज्यूमिंग रॉ. और अगर हम ऐसे भी हमारी आदत है कि हमें खाना बनाने टाइम में हमें जो भी खाना होता है हमें अच्छे से उसको कंट्रोल करना चाहिए. उसको हमें देखना चाहिए कि वो वॉश्ड है या नहीं है, और कच्चा खाने से पहले हमें जरूर अच्छे से उसको वॉश करना चाहिए, क्योंकि बाहर से हम लेके आते हैं तो बहुत सारे बैक्टीरियाज या जर्म्स उसके ऊपर में रहते हैं. और अगर हम उसको विदाउट वॉशिंग खाएंगे तो क्या होगा कि दोज बैक्टीरिया विल कम गोज इनसाइड आवर बॉडी. वो बैक्टीरियाज क्या होंगे, हमारे बॉडी के अंदर चले जाएंगे. नाउ कवर, कीप ऑल फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर कवर्ड. ऐसा तो नहीं होता ना कि हम खाना बनाते हैं और खाना को खुला रख देते हैं. नहीं, खाना को खुला नहीं रखते हैं. हम खाना बनाते हैं और खाना को ढक करके रखते हैं, पैकेज्ड रखते हैं, और ताकि उसमें डस्ट नहीं जा सके, वो उसमें मक्खियां नहीं लग सकती. खाना को हम रेफ्रिजरेटर में स्टोर करते हैं. क्रॉस कॉन्टेमिनेशन अवॉइडेड, कीप रॉ एंड कुक फूड अपार्ट. हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि कच्चा जो खाना है वो हम वहीं पे रख दें और कुक फूड भी वहीं रखें. तो अगर कच्चा खाना वॉश नहीं होगा तो क्या होगा, जर्म्स जो होंगे वो रॉ फूड से क्या होंगे, वो कुक फूड में चले जाएंगे. तो ये क्रॉस कॉन्टेमिनेशन हमें अवॉइड करना चाहिए. कुक, हमें प्रॉपरली खाना को कुक करना चाहिए. हम लोग बोलते भी ना कि खाना को बहुत ज्यादा कुक नहीं करना चाहिए वरना विटामिन सी जो होती है वो उसकी खत्म होना चाहिए. तो हमें खाना को उतना ही कुक करना चाहिए जितनी जरूरत हो, और उतना ही नहीं फ्रेश कुक्ड होना चाहिए. जैसे हमारा आदत होता है कि अरे फ्रिज में तो खाना पड़ा हुआ है, गर्म करके खा लो, हमें खाना बनाने का मन नहीं करता. तो हमें कोशिश करना चाहिए कि इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए. Cool, chill, freeze meat, poultry, refrigerate eggs and other perishables as soon as you get them
होम फ्रॉम द मार्केट। और जैसे ही हम इन चीज़ों को मार्केट से लेकर के आते हैं और अगर हम फ्रिज में उसको फ्रीज करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उसको वॉश करना चाहिए, तब हमें फ्रीज करना चाहिए। कंज्यूम सर्व फूड इन अ क्लीन इन्वायरमेंट, यूज क्लीन वेसल्स, प्लेट्स, स्पून्स फॉर सर्विंग फूड एंड वॉश देम वेल आफ्टर यूजिंग। हम लोग खाना खाने से पहले सब कुछ करते हैं, वॉश करते हैं, खाना बनाते हैं तो खाना खाने से पहले थाली को धोते हैं, सब कुछ करके और उसके बाद करते हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड सर। Some important points about sanitation. Sir, next slide. Government of India is implementing many programs to enhance. जैसे हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस समय बहुत ज्यादा इन चीजों के लिए एक्टिव है, वो टाइम टू टाइम बहुत सारे प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करते रहते हैं, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट हमारे बच्चों को दिए जाते हैं, नेशनल वर्म्स की दवाई दी जाती है, जिससे कि आपका जो एनीमिया होने लग के चांसेस हो जाते हैं, या फिर जो वर्म्स हमारे पैरासिटिक वर्म्स होते हैं जो कि लैक ऑफ सैनिटेशन के कारण होते हैं, तो उन चीजों से वो हमें वो बचा सके। उतना ही नहीं, इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव इंफॉर्मेशन, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन भी होना चाहिए एंड पार्टिसिपेट इन दीज स्कीम्स टू इंश्योर दैट इट्स बेनिफिट रीचेस एंड पीपल इन आवर कम्युनिटी। हमें इन चीजों के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि ये सारी चीजें जो होती हैं वो स्कीम्स के द्वारा हमारी गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर रही है और हम अपनी कम्युनिटी में इस चीज को बताना चाहिए, जिससे कि और भी बाकी लोग भी जो है इस चीज का बेनिफिट ले सके। सर नेक्स्ट स्लाइड। Promotion of healthy lifestyle helps create awareness in the learner on how lifestyle choices contribute. बोला जाता है ना कि हमारा लाइफस्टाइल सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्ले रखता है कि वो कैसे हम अपनी जिंदगी को जीते हैं। अगर हमारी लाइफस्टाइल अच्छी है तो क्या है कि हम हेल्दी एंड वेलबींग है, अगर हमारी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है तो हमारा क्या होगा, वी आर जस्ट सफरिंग फ्रॉम सो मेनी डिजीजेस, हम बहुत सारे डिजीजेस से सफर करेंगे। हमें डिमॉन्स्ट्रेट हाउ फिजिकल एक्टिविटीज आर इम्पोर्टेंट फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल, क्या कितना फिजिकल एक्टिविटीज जो होता है वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, और हाउ द लर्नर कैन सीक सपोर्ट एंड सर्विसेज टू कीप हेल्दी। अगर हमारा लाइफस्टाइल अच्छा रहेगा तो क्या होगा कि आपका जो भी सर्विसेज होंगे हम हेल्दी रह सकते हैं। लर्नर इज मेड अवेयर ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस एंड प्रैक्टिसिंग देम इन देयर डेली रूटीन। और लर्नर इज मेड अवेयर, लर्नर को अवेयर होना चाहिए कि कितना हेल्दी लाइफस्टाइल होता है चॉइस करने का, और जिससे कि वो अपना डेली रूटीन को अच्छे से डेवलप कर सके। लर्नर डिमॉन्स्ट्रेट इफेक्टिव वेज टू कॉप अप विद स्ट्रेस एंड अदर मेंटल हेल्थ कंसर्न। और लर्नर डिमॉन्स्ट्रेट जो भी होता है, हमें जो भी चीजें स्ट्रेस है, डिस्ट्रेस है, जो भी हमारे साथ हमारे जो मेंटल हेल्थ कंसर्न है, तो हमें उनके साथ कॉप अप करना चाहिए, हमें उनके साथ उनकी प्रॉब्लम्स को देना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, और उसके बाद फिर हमें उन चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए। सर नेक्स्ट स्लाइड सर। 5 mantras to prevent being overweight and obese। और 5 mantras जो होते हैं कि उससे हम क्या कर सकते हैं जिससे कि हम ओवरवेट और या ओबेस हो सके। बोला जाता है ना कि अगर हम बहुत ज्यादा ओवरवेट हैं तो क्या हो रहा है कि वी आर जस्ट इनवाइटिंग सो मेनी डिजीजेस, हम बहुत सारे डिजीज को हम अपने अंदर इनवाइट कर रहे हैं। तो ओवर ईटिंग एंड अनहेल्दी स्नैक्स शुड बी अवॉइडेड। अगर हम ओवर ईटिंग बहुत ज्यादा खाना खा रहे हैं या फिर उस टाइप के स्नैक्स खा रहे हैं, डेली समोसा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, तो इन सब चीजों से हमें अवॉइड करना चाहिए। हमें वैसा खाना खाना चाहिए जो हमारे लिए हेल्दी हो और हमें प्रॉपर च्यू करके खाना चाहिए। हमें उन सब चीजों को ले से लेना चाहिए अपने खाने में जिसमें कि ग्रीन वेजिटेबल्स हो, पल्सेस हो, फ्रूट्स हो, जिससे कि हम हेल्दी रह सके और हम इधर उधर अगर हम रोम भी करें तो उसमें हमें कोई भी थकान या कुछ चीजें महसूस नहीं हो। लिमिट कंजम्पशन ऑफ, अगर हम हेल्दी डाइट ले रहे हैं तो क्या हो रहा है कि कंजम्पशन ऑफ हमारा क्या है, फूड जो होता है वो हाई इन फैट और सॉल्ट और शुगर में नहीं जा रहा है। जैसे कि अगर हम पिज्जा खा रहे हैं या कोई भी फ्राइड फूड्स का पकौड़े खा रहे हैं, तो हमें वो केक खा रहे हैं, पैटिस खा रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, इन सब चीजों से हमारे अंदर बॉडी में ऑयल, शुगर, लॉट्स ऑफ शुगर, लॉट ऑफ चॉकलेट, लॉट ऑफ क्रीम्स वो हमारे अंदर जा रहा है। क्योंकि ये सारी चीजें जैसे समोसा बनता है, ऐसा नहीं होता कि बाकी जो समोसा छानते हैं वो एक तेल को अगर एक बार यूज किया तो फिर वो नेक्स्ट टाइम बचे हुए तेल को नहीं यूज करते, वो उन्हीं तेल को रिपीटेड कुकिंग ऑयल को रिपीटेड यूज करते हैं। यूजेस ऑफ ऑयल्स हाई इन सैचुरेटेड फैट्स लाइक घी, बटर, पाम ऑयल, इन सब चीजों को हमें लिमिट में यूज करना चाहिए इन स्कूल्स। लिमिट इनटेक ऑफ सॉल्ट एंड शुगर इनटेक, और हमें जो भी चीजें होती हैं जैसे अगर हम जागरी खा रहे हैं या फिर पानी ले रहे हैं तो ये हमारे बॉडी के लिए नुकसान नहीं कर रहा है।
लेकिन अगर हम बहुत सारा चीज शुगर खा रहे हैं या कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है कि वो हमें नुकसान कर रहा है। हमें स्क्रीन टाइम जैसे टीवी, मोबाइल, वीडियो गेम्स हमें दिन भर में 2 घंटे से भी कम देखना चाहिए। हमें टीवी, खाना खाते समय टीवी नहीं देखना चाहिए, मोबाइल नहीं चलाना चाहिए। बट नाउ दिस इज इन आवर हैबिट, हम बिना टीवी देखे खाना नहीं खा सकते, मोबाइल चलाए बिना खाना नहीं खा सकते। तो ये सारी चीजें हमें क्या करती है, ये इनएक्टिव करती हैं। बी एक्टिव, हमें एक्टिव होना चाहिए। हमें हमेशा हर 1 घंटे के लिए एटलीस्ट हमें या तो कोई फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए, आउटडोर स्पोर्ट्स खेलना चाहिए, डांसिंग करनी चाहिए, योगा करनी चाहिए। तो ये सब हमारा होना चाहिए। सर नेक्स्ट स्लाइड सर। Some important points about lifestyle. Five mantras for preventing micronutrient deficiency. जैसा हम लोग बोला कि between 11 to 1 p.m. exposed to sunlight in balcony, terrace, courtyard to maintain vitamin D. अगर हम विटामिन डी अगर लेना चाहते हो तो 11 से 1 के बीच में हम जा सकते हैं 30 to 40 मिनट्स के लिए। बी फोर्टिफाइड फूड्स, ईट फूड्स रिच इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये सब चीजें हमें खाना चाहिए क्योंकि आजकल के बच्चों में आयरन की कमी होती है, B12 की कमी होती है। तो अगर हम ये सब जो भी वॉट एवर द फूड्स आर शोइंग ऑन द स्क्रीन, अगर हम वो प्रॉपर फूड मात्रा में लेते हैं तो ये हम इन चीजों से बच सकते हैं। कंज्यूम वीकली आयरन फॉलिक एसिड, हमें वीकली आयरन फॉलिक एसिड को भी सप्लीमेंट लेना चाहिए। और लेमन वाटर तो हमें लेना ही चाहिए। गेट योर हेल्थ चेकअप डन, गेट योर हेल्थ चेकअप डन। हमें अपना ये होना चाहिए कि हमें हमेशा अपना हेल्थ का चेकअप कराते रहना चाहिए, जिससे कि अगर हम कुछ भी सफर कर रहे हैं तो हम उन चीजों को बॉडी को सफर में नहीं कर सके। नेक्स्ट स्लाइड सर। Some important points, sedentary behavior guidelines. Okay, limiting लिमिटिंग रिक्रिएशनल स्क्रीन टाइम। हमें क्या करना चाहिए, हमें स्क्रीन टाइम को लिमिट में कर देना चाहिए। हमें 2 घंटे से ज्यादा टाइम पे स्क्रीन पे नहीं देखना चाहिए। हमें लोअर लेवल्स आर एसोसिएटेड विद एडिशनल हेल्थ बेनिफिट्स। हमें एडिशनल हेल्थ बेनिफिट्स फॉर हेल्थ बेनिफिट्स चिल्ड्रन शुड मिनिमाइज सेडिमेंट्री टाइम ईच डे। और हमें चिल्ड्रन जो होता है उनको हमेशा जो ये जो लैकिंग जो कॉमन जो टाइमिंग होती है उसको मिनिमाइज करने चाहता चाहिए। और हमें सेडिमेंट्री ट्रांसपोर्ट को लिमिट करना चाहिए। एक्सटेंडेड सीटिंग एंड टाइम स्पेंट इंडोर्स थ्रू आउट द डे। हमें बहुत ज्यादा सिटिंग होकर के भी काम नहीं करना चाहिए। अगर हम 2 घंटे लगातार बैठे हो तो हमें 5 मिनट के लिए हमें वॉक जरूर करना चाहिए। लिमिट सिटिंग टाइम एट वर्क एंड होम। जैसा मैंने बोला कि हमें अपना सिटिंग टाइम को लिमिट करना चाहिए। बहुत ज्यादा अगर सिटिंग भी है तो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। ओके नेक्स्ट स्लाइड सर। Safety and security against violence and injuries. So next slide. Help each learner to develop the knowledge and skills to keep oneself safe from violence and injuries as well as promote safe environment for all. हमें अपना help each learner develop basic understanding of violence, abuse, and unsafe situations, and effective ways to respond and seek help to each keep self and others safe, including the role of assertive communications, and develop greater understanding of different forms of abuse, violence, and risky behavior, demonstrate responsible behaviors, promote collective response to violence and abuse, and advocate for safe environment, encouraging dignified and respectful treatment for और तो हमें वायलेंस के भी जैसे बहुत सारे टीचर्स जो होते हैं या फिर आपके जो पेयर ग्रुप ही होते हैं वो एक दूसरे में वायलेट करने स्टार्ट करते हैं, तो हमें इन सब चीजों को रोकना चाहिए। ओके सर नेक्स्ट स्लाइड। रोल ऑफ टीचर्स इन प्रिवेंटिंग वायलेंस। अब हम टीचर्स की क्या रोल होती है जिसमें कि हम वायलेंस को प्रिवेंट कर सकते हैं। एज एन इंडिविजुअल बी अ पॉजिटिव रोल मॉडल, स्पीक अबाउट अगेंस्ट वायलेंस। हमें वायलेंस के अगेंस्ट बोलना चाहिए। यूज कंस्ट्रक्टिव डिसिप्लिन मेथड्स, प्रमोट रेस्पेक्टफुल इंटरेक्शंस, सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ मोटिवेशंस। स्पीक आउट अगेंस्ट वायलेंस, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। और हमें जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज होती हैं वो आपका उनसे बात करनी चाहिए वायलेंस के थ्रू जो भी करते हो। As a colleague, school staff, advocate a holistic approach to provide safe and welcoming spaces for students. अगर हमारे स्कूल में ही बच्चे सेफ नहीं होंगे तो फिर that is the most worstful thing for us. Be an advocate for school safety mechanism. और जो भी स्कूल सेफ्टी mechanisms होते हैं
उनके लिए हमें एडवोकेट बनना चाहिए। बिल्ड नेटवर्क्स विद स्टेक होल्डर्स हु कैन ऑफर सपोर्ट सर्विसेज, और हमें जो भी ये सपोर्ट सर्विस होते हैं उनके अच्छे स्टेक होल्डर्स बनना चाहिए, जिससे कि वो अपने काम को अच्छे से कर सके और वो वायलेट ना हो। सर नेक्स्ट स्लाइड सर। Guidance to the facilitator. The learners should be reminded that this is a sensitive activity and they should listen carefully and respect the feeling of others. Establish ground rules before transacting in an activity and repeat them whenever necessary. Do not शेयर पर्सनल डिटेल्स ऑफ फ्रेंड्स और अदर्स। हम बोलते हैं ना कि अपने पर्सनल डिटेल्स नहीं किसी को देने चाहिए। डू नॉट टीच ईच अदर विथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग। अगर कोई आपको ये दे देता है तो आप उनसे ऐसे नहीं करो कि अगर वो आपको ट्रस्ट करके अपना कोई भी एक ऐसा इंफॉर्मेशन शेयर कर देता है, आप बस उसको किसी दूसरे को बच्चे को बता करके उन्हें टीज करो। दिस इज रॉन्ग, इसी चीज से बचाना होगा। While enacting the role play, one only needs to indicate the required action and should not hit or touch each other inappropriately. If learners share their emotion, do not correct them. Example, if a learner says, I do not like it when my uncle hugs me, please accept it and do not prove false. जब जैसे एक बच्चा बोलता है कि अगर मेरे अंकल मुझे हंग करते हैं तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता, तो आप उसे एक्सेप्ट कीजिए, आप उनके अंकल से बात कीजिए, उनसे प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कीजिए कि बच्चा आपको क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा है। टॉक टू द लर्नर, be calm, believe the child if they disclose and help or link them to potential help to stop the abuse. आप काम पेशेंसली कामली उन चीजों को सुनिए और किसी को बिना डिस्क्लोज किए हुए उस बच्चे की हेल्प कीजिए, और सो दैट वो अब्यूज होना बंद हो सके। सर नेक्स्ट स्लाइड। टिप्स टू हैंडल डिस्क्लोजर्स। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Affirm the child for telling you, give positive message. I'm glad you told me, I will help you now. आप उनको ये कीजिए कि वो एक पॉजिटिव मैसेज आपको दे कि मैं हूँ। डिमॉन्स्ट्रेट दैट यू बिलीव व्हाट द चाइल्ड हैज सेड, और वॉट एवर द थिंग्स द चाइल्ड इज, डिमॉन्स्ट्रेट कीजिए कि वेदर द चाइल्ड इज शेयरिंग द थिंग्स टू यू, वो आपको बिलीव कर पाएंगे या नहीं कर। रीएश्योर हिम और हर दैट यू विल असिस्ट इन गेटिंग हेल्प, और उनको रीएश्योर कीजिए कि आप उनको हेल्प करेंगे। आंसर देयर क्वेश्चंस, उन्हें ऑनेस्टली उन्हें गलत कभी भी उनको जवाब नहीं दीजिए जिससे कि वो गलत डायरेक्शन में मूव हो सके। डोंट प्रॉमिस टू कीप इट अ सीक्रेट, इंस्टेड एक्सप्लेन व्हाई यू हैव टू रिपोर्ट इट एंड होम। और आप कभी भी उनसे ये नहीं बोलिए कि नहीं, वॉट एवर द थिंग्स यू विल टेल मी आई विल जस्ट कीप इन अप टू मी। ऐसा नहीं होता। अगर आप प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं करेंगे तो फिर आप उसकी प्रॉब्लम को कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम जो होती है वो सिर्फ आपसे नहीं होती, वो किसी और से होती है, और तभी आकर बच्चे आपसे डिस्कस करते हैं। अवॉइड टचिंग द चाइल्ड, आस्क फॉर परमिशन इफ एट ऑल। आप बच्चे को बिना उसके परमिशन के कभी भी उसको टच नहीं करें। emphasize that it is not the fault of the child, और you बच्चे की गलती नहीं होती है। promise that you will tell only those people you are required to tell और no one else। अब ऐसा नहीं कि मैटर किसी और को हो और हम पूरी क्लास में, पूरी टीचर्स में हम उन चीजों को बोले जा रहे हैं कि बच्चे ऐसा कर रहे हैं, वो बच्ची ऐसा कर रही है। ये काम हमें नहीं करना चाहिए। हमें उन्हीं बंदों से बात करनी चाहिए जो कि उनसे उस केस से रिलेटेड हो। नेक्स्ट स्लाइड सर। What not to do. Sir, next slide, please. Don't be panic or overreact. हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें पैनिक नहीं होना चाहिए, हमें ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, हमें कभी भी बच्चे को ब्लेम नहीं करना चाहिए। प्रेशर द चाइल्ड टू टॉक। हमें कभी भी प्रेशर नहीं करना चाहिए जब बच्चों को कि नहीं तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है। अगर बच्चों को लगेगा तो वो खुद आकर के आपसे बात करेंगे। क्वेश्चन टू मच और एग्रेसिवली, हमें उनसे कभी भी बहुत सारे क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, उन्हें एग्रेसिव वे में नहीं पूछना चाहिए। आस्क द चाइल्ड टू फॉरगेट और एडजस्ट, या तो उससे बोले कि अगर आप भूल सकते हो उसको तो भूल जाओ, या फिर आप उसके साथ एडजस्ट कर सकते हो तो ऐसा कर जाओ। ऐसा हमें कभी भी बच्चों को नहीं बोलना चाहिए। मेक द चाइल्ड रिपीट द स्टोरी, और कभी भी हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि उस स्टोरी को रिपीट करे वो बच्चा। कॉन्फ्रंट ऑफेंडर इन चाइल्ड प्रेजेंट, और हमें कभी भी ऑफेंडर को चाइल्ड के प्रेजेंस में ऑफेंड नहीं करना चाहिए। सर नेक्स्ट, सर लास्ट स्लाइड प्लीज। हाउ टू रिस्पॉन्ड टू स्टूडेंट्स हु कॉज हार्म टू अदर्स। हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए जो कि हमें आपको हार्म करता हो।
तो सबसे पहले लिसन अटेंटिवली टू अंडरस्टैंड हिज और हर पर्सपेक्टिव. हमें उन चीजों को सुनना चाहिए कि कैसे उनका पर्सपेक्टिव क्या है, वो क्या करते हैं, उनके फीलिंग्स को एक्नॉलेज करना चाहिए. उन्हें शो द स्टूडेंट अ पॉजिटिव इमेज ऑफ हिम और हरसेल्फ, उनका पॉजिटिव इमेज हिम और हरसेल्फ उन्हें बताना चाहिए कि क्या पॉजिटिव इमेज है. डिस्कस एक्सेप्टेबल बिहेवियर पैटर्न्स and at the last highlight consequences, decide on a further course of action. हमें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए जिसकी वजह से we can just help the students regarding this topic. So last slide please. Himanshu sir, last slide. So this is the end of the topic here. I hope you all have understood the topic very well. I have tried my level best. If anyone want to ask question, they can write the question in the chat box. And thank you so much for being patient. Okay. Hello. It has been already shared. Please. Acha, you have shared, I have shared it. So I'll have to stop it. Yeah. So Thank you, Arivra Sahodia. Thank you, Himanshu sir. Thank you, Radhika ma'am. Thank you, Simal ma'am, for giving the chance for taking the session. so Thank you so much, everyone. thank you, ma'am. Finally, we have come to the end of the today's session. Yes, after there's so much hindrance, we have just reached a session, sir. We have completed the session. There were a lot of hindrance. Please bear with us. It's been a really cumbersome task to continue the session, which had to be completed. Yes, sir. Has to be extended to 42, but these are the things Yes, sir. which are not in our hands. It's not in our hand. I'm just sitting outside my room, sir. I'm just sitting in the balcony. So participants are requested to kindly fill the feedback attendance link. And please keep in mind that these are the chances where it has happened today. Just a matter of chance. Otherwise, we didn't want from our side this decision to extend. But finally, it has been judiciously completed, and I hope the participants would have learned. And if there is any question, can be given in the chat box. And please write your feedback, fill this attendance link, try to score so that the participant certificate can be generated. We all know that the criteria for the score of 4 is needed for qualifying, apart from 4 others that we have already discussed. That there are 4 criteria for the generation of certificate. The first one is your registration by your school. The second is you must have attended the training using the same credential which your school has filled up. The third is you must have been in the training for at least 40 minutes. And the fourth is the attendance of the quiz must have been, attendance has been filled up. And the quiz which has been given must have been answered with an accuracy of 4 questions out of 10. If there are 10 questions, you must have answered 4 questions correctly. So this is the criteria. So with this, now we are at the end, and I request the person to please fill your feedback. Ma'am, I think it's our. Yes, sir. Thank you so much. Thank you so much on behalf of Aryabhat School Complex. Thank you so much, sir. Thank you so much for giving the chance, sir. And I'm extremely sorry for the technical issues, but it was not in my hands, sir.
but I really managed to complete the session on time in 1 hour only, sir. Thank you so much. Yeah, thank you so much, sir. May I leave, sir? Yeah, please.